There were bugs in my eyes. There were insects in my eyes. and there अंदर was चले गए dust, थे? Yeah, like here. हाय दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल। हाय एवरीवन, मैं अभिषेक बैनर्जी। हमारी जब शूटिंग शुरू होती थी, चीज ओके Yeah. या अभिषेक को ठीक है, वो कल या का राजपाल हाँ, ठीक है वो। ठीक है, क्योंकि तारा को तो दो लोग आते थे ऐसे ऐसे इसको पकड़ के, एक इधर पकड़े हुए है, एक इधर तारा को ऐसे आ रही है, फिर तो ये यार क्या करवा जैसे रहे हो? एक्शन बुला तो सबको छोड़ के फिर ये अपनी टोटल वही एनर्जी, और जैसे कट हुआ अरे बाप रे। Hi everyone, मैं हूँ तारा सुतारिया और आप देख रहे हैं और बताओ स्तुति के साथ। और बताओ विद स्तुति। So welcome to all of you, Rajpal Yadav, Tara Sutaria, and Abhishek Banerjee. थैंक यू you. स्तुति। और बताओ। But you know, I'm going to quote Dia Mirza here, who once said that she was told that she's too pretty for certain roles. I mean, suddenly her beauty became her bane. Did you feel that in your career span, that because you were seen glamorous roles mein, so you grabbed onto this opportunity when it was offered? Yeah, I do. I really wish that I had the opportunity to do this, sort of from the get-go. I understand why there was why there is or was a certain perception around, how I look or the films that I've done and things like that. Totally understand. But I think as young actors, we're raring to go, and there's so much today that can be done with all of us. I definitely grabbed onto this as soon as I heard the narration, and I was so excited. And I'm just hopeful that this opens the door to me and people like me in our industry, and that young women and young girls can just be seen in more exciting and promising roles like Apurva, and not just be limited or restricted to just one kind of space, because all of us we want to do everything. We don't just want to do one thing. That's the exciting part of this job, is you should be able to and be given the opportunity to do a bunch of things rather than just stick to one thing, which becomes a bit boring after a certain point. As an actor, do you finally feel कि मुझे मौका मिल रहा है to kind of delve into characters that you wanted to? हाँ, एक्टर तो हमेशा ये अपॉर्चुनिटी खोजता रहता है और अब मौके की तलाश में ही रहता है। कुछ लकी होते हैं, मिल जाते हैं, कुछ अनलकी होते हैं जिनको मौके नहीं मिल पाते हैं। तो आई एम वेरी लकी। क्या आसान होता है लोगों को हंसाना या डराना? सबसे सरल होता है सब कुछ, बस कन्विंस हो जाए सामने वाला, चाहे हंसी हो चाहे सीरियस हो, अगर सामने जो देख रहा है वो कन्विंस हो जाए तो फिर सब सरल है। तो वही कन्विंस करना ही या सेटिस्फाई करना कि नहीं ये आपने जो किया मुझे अच्छा लगा, आई थिंक ये सबसे दुनिया कठिन है। Hearing all of you speak, आप लोग, one can understand कि जो आपकी कला है, आपका skill है, it is like you said to convince people कि जो किरदार मिला है, you want to do it to the best of your abilities. और yet आपके चाहने वाले, आपके fans, हम जैसे लोग जो देखते हैं, आपको किसी किरदार में बहुत प्यार मिलता है, पर वो आपको बांध भी देता है. A lot of people want that. They want कि हमें उस किरदार के नाम से बुलाया जाए, हम उतने हिट हों, and then वो फिर अपनी ज़िंदगी उसे चेंज करने में भी निकालते हैं कि एक और पहचान हो, हम खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. ये एक सर्वाइवल थ्रिलर भी है और इंडस्ट्री में बड़े साल आप लोगों ने सर्वाइव किए हैं, अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं. अगर मैं पूछूं वो कौन सी चीज़ है जो आपकी सीख है, जो सबसे ज़्यादा जिसने मदद करी इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए आपकी? राजपाल, आई थिंक हार जो उसको आपने वो क्या शब्द बोला था कि रिजेक्शन, आई थिंक रिजेक्शन, चाहे स्टूडेंट, बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मुझे हमेशा रिजेक्शन का डर या हार का डर, तो हार मैं अपने साथ में लेके चलता हूँ ताकि इधर तक रहे, जितने भी हार हैं ये ठीक रहे, तो आई थिंक इसी हारों में से जीत के तिलक लग जाएंगे कभी. तो जितना आई थिंक जब मुझे हार मिली है तब तक मुझे एक जीत का मौका मिला है, मुझे ऐसा लगता है. That's very deep. क्या बात? इसके मतलब यहाँ पे मैं रिजेक्ट हुआ या मुझे हार मिली या मैं फिट नहीं हुआ, तो इसके मतलब मेरा फिट का स्थान तय है. तो मतलब अब हार का अनुभूति नहीं है, हार पता ही नहीं है.
तो आई थिंक तब फिर जीत का भी पता ऐसे ही है कि मतलब, लेकिन जिनकी हार सुनिश्चित, अगर हार की समझ आपको है तो जीत का लक्ष्य आपके दिमाग में कतई क्लियर है। ये मतलब वही मुझे जीने के लिए लगातार। That's beautiful. Abhishek, What? you're the one thing that's helped you survive for so long. I don't know. I think I have a lot of patience. हाँ, वो तो एक एक्टर को चाहिए। Waiting game का अपना strong. अभिषेक दूसरा चारा भी नहीं है। हाँ, मतलब बोले यार लॉट ऑफ पेशेंस, बोले यही है। I think that's the strength I have to Yeah. survive. That I can be very patient and I can distract myself. On the set with- also you'll wait for as long yes, as. yes. I don't without have any throwing a problem. For me, tantrum. no, I don't. Well, in fact, I love that because then you're there, you're chilling, and like Mhm. otherwise, if you are not shooting, it's very boring. Yeah. So in fact, I now am addicted to set life. So because I feel that is so like I don't know, adventurous. Every day you go to a different location, so you're like always on that. So patience has never been a problem for me. I feel वो काफी है life में, and I can easily distract myself with my life, traveling and things like that, which I Yeah. want to do. So yeah, I mean वही है. I mean I'm still like in the running, right? तो मैं तो सर को तो इतने साल हो गए हैं, तो उनके पास जवाब है. तो बस अभी तक जवाब है नहीं कि मैं कैसे survive करूँगा, क्या करूँगा. I'm just trying. I'm fighting every day. Tara, what about you? I think as a young person, what's really important, not only in our line of work but in life also, is to begin to really know yourself. And I think this industry has, जो सबसे बड़ी सीख मिली है till now, at least I can say, is whatever experiences I've gone through, the good stuff, the bad stuff, the very confusing stuff, I have begun to really, truly and deeply know and understand myself, which gives me clarity, which helps me understand who I want to be, how I want to be, and who I definitely don't want to be. That is helpful not only as a performer, but first and foremost as a human being. And so being in this industry has actually helped me go even deeper into myself. And that's one thing I've taken a lot of pride in my whole life, is actually that I have always tried to know myself. But this industry, it can teach you so much so soon that it's beneficial actually. Sometimes it hurts, it's painful. Experiences in this industry can be very cruel. But then you also learn so much that you're prepared for life, for anything that's thrown your way. So that's what's it's really taught me that. Lovely. Also, you seem to be prepared for a lot, बड़ा ही hardcore और पता नहीं मिट्टी से गुजर रहे हैं और सारे intense scenes हैं. How's it shooting all of that? It's so much fun. It was? I'm not gonna lie. I know it looks very intense. I really enjoyed it. I know it's a lot. I'm not gonna lie. It's a lot. Every day was a lot. Like there was no day of like, हाँ chill करते हैं, ice cream खाते हैं, वो करते हैं. Actually, ice cream ही खाते हैं. Okay, start from your makeup routine, because you would be used to being glammed up. Yeah. और यहाँ आपको जरा glammed down. The makeup that was used for this film was specific No to mitti and ambar and more mitti and more ambar and नहीं, उसके बाद भूल गए सबसे बड़ा मेकअप. एक गाड़ी गई, उसके बाद में 5 मिनट तक वो चारों तरफ जो डस्ट आती थी, वो सबके कैरेक्टर सेट कर Actually, we used to eat food. Sorry, मतलब eat dust, apply dust. So there's this one So- sequence where I'm in this, and we were shooting in a well for a couple of days, and I remember there were bugs in my eyes, there were insects in my eyes, and there अंदर was चले गए dust, थे? yeah, like here, and my my dear makeup artist is looking at the monitor, and I've come out of the well, and she's looking at me like, कैसे बोलूं? And I was like, what? And I also kept doing this, and she's like, oh, Tara, just come here 1 second. And she's like, I'll just try to. And then I realized. So I mean, every day there was some new experience like this happening. One day some shoulders come Getting out. dislocated. सुबह ये कोई नहीं What पूछा shoulder था. has सुबह ये She नहीं has कोई पूछता था. me and her have the same problem. Our shoulders Yeah. get dislocated. नहीं So सुबह imagine her shoulder getting dislocated. Imagine we have to now carry her and drag I'm her. not envious. Why? But no complaints. It was Yeah, really, yeah. really fun. और नहीं सबसे बड़ी खासियत थी कि हम लोग शूटिंग अलग अलग जाते हैं, तो आर यू फाइन, बढ़िया, सब बढ़िया, हाउ वाज द, मतलब सब ये चलता है. हमारी जब शूटिंग शुरू होती थी, चीज ओके या अभिषेक को ठीक है, वो कल का राजपाल ठीक है, क्योंकि everybody is injured. शूट तो कर सकता है ना, हाँ. हाँ नहीं मैनेज तो हो जाएगा, मतलब Poor thing. कौन he कितना तो ठीक है. He was with his
Immobile. कौन कितना ठीक है उसके हिसाब से सिंपैथी भी दे रहे हैं, लेकिन शूटिंग तो हो जाएगी ना. And on top of that, Tara Sutari used to not take showers. So like, you know, Yeah, I didn't have a bath for 2 weeks because I really had to look at Yeah. one point, which is not even in the trailer. So I'll तारा leave को it तो for दो you. लोग आते थे ऐसे ऐसे इसको पकड़ के, एक इधर पकड़े हुए है, एक इधर तारा को ऐसे आ रही है. हम लोग बोले कि क्यों इसकी दुर्दशा नहीं कर सही रहे में कभी बार बुरा लगता था और यार, बुरा कभी बार लगता था। genuinely बुरा हैं. और लगता था फिर यार ये क्या करवा जैसे रहे हो। एक्शन बोला तो सबको छोड़ के फिर ये अपनी टोटल वही एनर्जी, और जैसे कट हुआ अरे बाप रे. तो quite literally जो खून पसीने की कमाई जो वो बोलते हैं वो इस Totally. फिल्म में हुई है. Totally. Yeah. From what we've heard. So this is of course piqued our curiosity quotient. Thank you for this very fun interview and all the Thank you. revelations.